Hello, I'm Sneha Koshi. The assembly polls are being seen as a crucial test for political parties ahead of the big 2024 parliamentary elections in Chhattisgarh. It's a do or die for the BJP as well as the Congress. BJP and Congress both have made major promises in their manifesto, and ahead of the phase 2 of voting, my colleague Nagma brings you this exclusive conversation with incumbent Chief Minister Bhupesh Baghel, who, by the way, has made a tall claim that Congress will win 75 of the 90 seats in Chhattisgarh. दूसरे दौर की वोटिंग छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को है और कुछ दिन बचे हैं, इसलिए कैंपेन जोर शोर से है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस समय चुनावी दौरे पर हैं और हम आज उनके साथ मौजूद हैं। चुनाव के बिल्कुल बीच माहौल में एक नए घोटाले की बात हो गई, महादेव ऐप स्कैम। अब लोगों को इसमें क्या फर्क पड़ता है? जब आप जाते हैं तो लोग इसको लेकर सवाल पूछते हैं, कैसे असर डाल रहा है ये? देखिए, ये तो भाजपा और ईडी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। ये स्टोरी पहले से लिखी गई थी, वो स्क्रिप्ट लिखा गया था और उसको प्लान किया गया है। बहुत मज़ेदार बात ये है, जिस लड़के पकड़ा गया वो भाजपा का है, जो गाड़ी पकड़ी गई वो अमर अग्रवाल पूर्व मंत्री उसके भाई की है। तो पैसा भी भाजपा वाले या ईडी वालों ने प्लान किया। तो ये सारे स्टोरी है। और एक दिन पहले ईडी प्रेस नोट जारी करती है कि शुभम सोनी जो है वो महादेव का मैनेजर है। दूसरे दिन भाजपा एक वीडियो जारी करती है जिसमें शुभम सोनी को अपने आप को मालिक बता रहा है और उनको अपने नौकर बता रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आज तक की दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं हुआ कि अपने नौकर के साथ ही 250 करोड़ रुपये खर्चा करे। ये तो पहली बार देखने को मिला है। जांच करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के लोग बढ़िया मनोरंजन कर रहे हैं। वो और कोई स्टोरी आएगी उसका इंतजार करें। इस प्रकार से भाजपा वाले स्टोरी ला रहे हैं और लोग आनंद ले रहे हैं। लोग आनंद ले रहे हैं। जैसे आप और हम अगर ये समझ रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई आप कह रहे हैं, पर क्या जनता ये समझ रही है या इससे कोई फर्क पड़ता है माहौल में, आपको नुकसान होता है? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। 3 साल से लगातार आईटी, ईडी, टीआरआई सब घूम रही छत्तीसगढ़ और सब जान गए हैं केवल ये डराने, धमकाने और वसूली करने और साथ ही सत्ता पक्ष को भयभीत करने, बदनाम करने की कोशिश। लेकिन जनता जान चुकी है कि इनका उद्देश्य क्या है। पर बघेल जी, आपके पास पहले ही बहुत सीटें हैं। आपके पास पहले ही बहुत सीटें हैं अभी तो। 90 में से 73 लगभग है ना। तो अब तो और सीटें बढ़ेगी। कितनी सीटें? कुछ तो कम होंगी, सीटें कम होंगी, कुछ सीटें बढ़ेगी। हमारी कितना हो जाएगा? 75 पार। 75? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। जब 5 साल हमने काम किया, हर परिस्थिति में, चाहे कोरोना काल ही क्यों ना हो, सब में छत्तीसगढ़ सरकार हर वर्ग के साथ, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे वनांचल में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई हों, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, सब कोरोना काल में सबका सहयोग दिया, सबको सहयोग दिया और कोरोना से हम सब लोग मिल के निपटे हैं और सबके लिए योजनाएं बनाए। और सभी वर्ग है, कोई ऐसा एक वर्ग नहीं है जो ये कह सके कि इस 5 साल में हमको नुकसान हुआ है। हर वर्ग, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो, व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे छात्र छात्राएं, सब लाभान्वित हुए हैं। सबको लगता है सरकार हमारी सरकार है। And rescue operations have been on now for more than 2 days, for over 50 hours, with 40 laborers still stranded as the tunnel collapsed in Uttarakhand. Huge steel pipes have been brought in from Dehradun and Rishikesh to help rescue the laborers. It's a battle against time.
उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 40 लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 40 घंटों से लगातार चल रहा है। रविवार सुबह 5:45 पर यह लैंडस्लाइड हुआ था और जिसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी समय हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हर वो चीज़ तलाश की जा रही है जिससे इन लोगों को बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा वहाँ पर SDRF, NDRF, स्थानीय पुलिस, मेडिकल की टीमें भी मौजूद है और साथ ही कुछ फॉरेन एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है ताकि इन लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा सके। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन लोगों से बातचीत हुई है, जो अंदर लोग फंसे हैं उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने खाने की डिमांड की थी कि उनको खाना चाहिए, तो पाइप के ज़रिए उनको खाना भेजा गया जिसमें चने हैं, चॉकलेट है, बिस्कुट है, इसके अलावा मुरमुरे हैं और ड्राई फ्रूट्स है ताकि उनको वहाँ पर भूख जो उनको लग रही है, जो उनको खाने की डिमांड है वो पूरी हो सके। इसके अलावा वॉकी टॉकी से उनसे बातचीत की गई है और वो सभी लोग ठीक है। दूसरी तरफ जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनके कंपनी के कर्मचारी और उनके साथी है, उनसे उनकी बातचीत हुई है और उनको हिम्मत बंधाई है ताकि वो लोग मानसिक तौर पर मजबूत रहे, क्योंकि ये एक ऐसा क्षण है जिसमें लोगों को मानसिक रूप पर मजबूत रहना बेहद ही ज़रूरी है। इसके अलावा भी अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार वहाँ पर जो बड़ी मशीनें हैं वो मलबा निकाल रही है, ट्रकों के माध्यम से बाहर भेजा जा रहा है और ऑक्सीजन और पानी की सप्लाई, चूंकि पानी अंदर वहाँ मौजूद है और ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। टनल के अंदर 2 पाइपें जो साथ जुड़ी होती है वो पानी अंदर ले जाती है और बाहर लाती है। उन पाइपों को ही अब इनकी लाइफलाइन बनाया गया है, इन 40 लोगों की लाइफलाइन बनाया गया है। उसी पाइपलाइन के जरिए खाना भी भेजा जा रहा है और ऑक्सीजन भी भेजी जा रही है। दरअसल ये मजदूर जब काम का देर रात शिफ्ट करके वापस अगले दिन सुबह आ रहे थे तब ये बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। But what really happened in Uttarakhand, it's definitely beyond just one isolated case. My colleague Maria Shakil breaks it down for us. Let's try and give you a sense of what really is happening on ground zero. Rescue and relief operation, remember, is continued through Monday after an under construction tunnel on the Yamunotri National Highway partially collapsed on Sunday. 40 construction workers are believed to be trapped inside. The 4.5 kilometer long tunnel is meant to connect Silkyara to Dandalgaon in Uttarkashi of Uttarakhand. It is being built under the prestigious and controversial Char Dham road project, and it aims to reduce the journey from Uttarkashi to Yamunotri Dham by 26 kilometers. And officials are saying that a 40-meter portion of the under construction tunnel collapsed on Sunday morning. The SDRF inspector, who is on ground and is also heading the operation, who goes by the name Jagdamba Bijalwan, has said that the debris could be blocking anywhere between 25 and 50 meters of this tunnel. At least 40 workers from several states, from UP, Bihar, Jharkhand, West Bengal, all of them who were engaged in the construction work have been trapped inside this tunnel. The rescue work, though, is going on in full force. The officials have deployed heavy cutters and machines to ensure that they are able to break through this debris. The good news, though, is that the workers are safe and authorities have managed to establish contact. They are being provided food, water through a tunnel. And they are essentially in this buffer zone. So what does it actually mean? This is a 400-meter buffer zone, which is where they are, and they're not trapped in the debris. Oxygen is being provided through a tunnel. If you look at that, that is a special pipe that has been created for ensuring that they get what they need for survival. Officials are saying that they have to cut through 50 meters of rock slabs to open the tunnel and prepare an escape passage for the workers. Now, disturbing and shocking news from one of India's popular tourist destinations, Agra. A woman, an employee at a homestay, was gang raped at her workplace on the eve of Diwali by guests who were staying at the homestay. Police say 5 accused have been arrested. On Diwali Eve, as the country was celebrating the festival of lights, a woman
working at a homestay in Agra was pushed into darkness. The employee was summoned on the night of 11th November and allegedly forced to perform sexual favors for the guest staying there. After the horrific sexual assault, those running the homestay tried to make her stay the night. She was allegedly beaten up, even stuck with a beer bottle when she tried to leave. The incident drew attention of nearby residents who rushed to the scene and captured the commotion that ensued the video. The victim was earlier blackmailed by the accused, who had also filmed an objectionable video of her, according to the FIR. कल थाना ताजगंज पुलिस को सूचना मिली थी एक महिला के साथ दुष्कर्म व मारपीट की घटना हुई है। उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए पीड़िता की तहरीर के आधार पर दुष्कर्म, मारपीट व अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना में शामिल 5 अभियुक्त, जिसमें 4 पुरुष व 1 महिला है, गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। The horrific incident happened on the eve of Diwali. While police investigation is underway, this incident should force us to rethink about the safety of women at workplaces. With camera person Rajesh Gupta, Naseem Ahmed and Tanish Punjabi for NDTV. And Delhi was breathing easy for a few days after rain cleared up the air to some extent over the weekend. But as expected, Diwali celebrations and open flouting of the cracker ban washed away all the benefits. We are back to breathing toxic air. अगर देखें दिवाली के दिन और दिवाली के अगले दिन, तो इन 3-4 दिनों में जो औसतन जो AQI देखने को मिलती है वो इस साल की अभी तक की बेस्ट रही है पिछले 6-7 सालों में. Pollution reaching worrying levels again, but a comparatively better situation this time. Crackers are believed to be behind this deterioration in air quality. Each year, authorities impose bans on firecrackers in the capital, but only rarely do these bans appear to be enforced. But this time round, the air quality is better than previous Diwalis, with 2021 being among the worst. This year, the air quality remained at around 300, which is still worrisome. Despite the police crackdown on illegal crackers, the air quality in the national capital has considerably deteriorated. The police have seized 11,249 kilograms of crackers so far. 96 cases have been registered and 95 people have been arrested. Meanwhile, the Delhi government claims the improving situation was worsened by crackers and that crackers were sold in neighboring states. दिल्ली के अंदर पटाखों के निर्माण पर, भंडारण पर और बिक्री पर बैन था और वो यूपी और हरियाणा से आए. यूपी की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है और दिल्ली की पुलिस है. 3 पुलिस के मॉनिटरिंग के बीच में एक आम आदमी पटाखों का इतने बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई नहीं कर सकता है. ये खास लोगों ने किया है. 106 anti-smog guns on high rises to remain active to manage the pollution, as these have been deployed at various pollution-causing facilities such as MCDs and CND plants, landfill sites and identified high-rise buildings, amongst others. Bureau Report, NDTV. Well, it's time for a short break. On the other side, news and updates will continue. Welcome back. And India's External Affairs Minister Jai Shankar has met UK's new Foreign Secretary, that's UK's former Prime Minister David Cameron, saying it was a pleasure to meet UK Foreign Secretary. David Cameron congratulated him on his appointment, had a detailed discussion on realizing the full potential of our strategic partnership. Also exchanged views on the situation in West Asia, the Ukraine conflict and Indo-Pacific. He also tweeted about his meeting with the now UK Home Secretary James Cleverly. Former UK Prime Minister David Cameron sensationally returned to the British government as Foreign Secretary on Monday as Prime Minister Rishi Sunak shook up his top team ahead of a general election expected next year and sacked right-wing firebrand Suella Braverman as Interior Minister.
Thanks so much for coming. It's been a morning of hectic developments at 10 Downing Street. UK Prime Minister Rishi Sunak, buckling under pressure, sacked his Home Secretary, Suella Braverman. The decision was triggered by Braverman's article slamming police action, accusing the London police of double standards and criticising pro-Palestine demonstrators, calling them hate marchers. Her comments were seen to instigate right-wing protesters to take to the streets, forcing Sunak to act. Braverman's sacking was clearly the highlight, but not the only decision taken by the UK Prime Minister today. As part of his cabinet rejig, Sunak replaced Braverman with James Cleverly, and in a surprise move, former UK Prime Minister David Cameron returned to the government as the new Foreign Secretary. Cameron had been out of the government after he resigned post losing the 2016 Brexit referendum. Indian origin UK politician Suella Braverman is not new to controversies. She's been sacked as the Home Secretary for the second time now. Last year, she was removed by then Prime Minister Liz Truss over a security breach involving a government document. She's also grabbed headlines for her comments on migrants, saying asylum seekers in the UK pretend to be gay for special treatment. She's also faced heat for calling migrants coming to UK an invasion. In her first response, Suella Braverman has said that serving as the UK Home Secretary was a great privilege, adding that she will have more to say in due course. Bureau Report, NDTV. And the US has conducted precision airstrikes in Syria on facilities used by the Iranian Revolutionary Guard, according to the Pentagon. Is this the first time? No. Secretary of Defense Lloyd Austin has said the strikes were in response to continued attacks on US bases in Iraq and Syria by Iran-backed fighters. Last night, our U.S. forces conducted precision strikes in eastern Syria against two facilities that are used by Iran's IRGC and affiliated groups. US admits to airstrikes on facilities in eastern Syria used by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps and Iran-affiliated militias. This marks the third time in 3 weeks that US has targeted facilities in the region in Syria in response to attacks on American forces based in Iraq and Syria. According to reports, Pentagon officials said that fewer than a dozen Iran-backed militia personnel were present at the bombed sites, and it was likely some were killed in the attack. US Defense Secretary Lloyd Austin said in a statement that the strikes were conducted against a training facility and a safe house near the Syrian cities of Abu Kamal and Mayadin. In its defense, the United States further added that its forces in Iraq and Syria have been attacked at least 48 times since October 17th, and at least 56 US service members have been injured. The US maintains presence in Iraq with 2,500 troops and 900 in Syria. The troops help local forces fight what's left of the Islamic State in the region. These attacks from Iran-backed militias have intensified ever since the Israel-Hamas war broke out on October 7th. The US has been sending military assets to the Middle East since then in order to prevent a wider conflict. With Vishal Vivek, NDTV Bureau Report. Now, a special NDTV Diwali for some in the national capital. NDTV team celebrated Diwali with people, including children, in Delhi's Taimur Nagar, spreading festive cheer and love. दिवाली मनाए साथ में और क्या करेंगे? दिए जलाएंगे। दिवाली, हैप्पी दिवाली। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। हैप्पी दिवाली। एनडीटीवी की तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली।